Our next topic is features of Indian economy on the eve of independence. Indian economy had the following characteristics. You can say features also. In Hindi you can say Visheshtaएं, main points of the Indian economy at the time of independence. In this topic we will study about first is stagnant economy. Stagnant, you know the meaning of stagnant, there is no movement. Stagnant is the one which slow little or there is no growth in income. On the eve of independence, Indian economy was completely a stagnant economy. On the eve of independence means when India got independence, the economy was stagnant. Between 1860 to 1925, growth rate of per capita income, you know the meaning of per capita means total population and national income. National income divided by the total population, you can get the rate of per capita income. It was as low as 0.5% per annum growth rate, and between 1925 to 1950 it was merely 0.1% per annum. On account of this stagnation means there is no movement, there is no growth in income, bulk of Indian population lived in poverty. गरीबी में हमारे देश की ज़्यादातर जनसंख्या उस वक्त रह रही थी. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स, जीने का जो स्तर था, ऑफ द पीपल रिमेन मिजरेबली लो. इट वाज आल्सो लो. एपिडेमिक्स यू कैन से एंड फेमाइन्स, they were recurring phenomena. Epidemics, as nowadays the corona is called epidemics, pandemic also. अकाल और जिस वक्त महामारियां थी वो बार बार हमारे देश के अंदर रिकरिंग हो रही थी, यानी कि बार बार वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर बैड इफेक्ट डाल रही थी. सेकेंड इज बैकवर्ड इकोनॉमी. इकोनॉमी दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड, देर इज पर कैपिटा इनकम वेरी लो. Indian economy was a backward economy on the eve of independence because the per capita income, it was in 1947-48 it was just rupees 230 per capita income, means a person average income was 230, and bulk of the population was very poor without sufficient food, clothing and shelter. Because a person, or you can say a human being, he or she will be called poor when he cannot get sufficient food, clothing and shelter. यानी कि एक व्यक्ति जिसके पास ना खाने के लिए खाना है, दो वक्त की रोटी जिसको आप बोलते हैं, ना पहनने के लिए कपड़ा है और रहने के लिए घर है, the person will be called poor. And unemployment was rampant that is spreading anywhere without control. व्यापक भी इसको आप बोल सकते हैं कि जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, ऐसी बेरोजगारी हमारे देश के अंदर उस वक्त फैली हुई थी. थर्ड पॉइंट इज एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस. इट इज हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट. यू कैन से एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, यू कैन टेक दिस पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस. 72% पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन मीन्स काम करने वाले व्यक्ति, यानी कि जिसमें बच्चे इंक्लूड नहीं होते, और अबव 60 ईयर एज जिसके अंदर काउंट नहीं होती, वर्किंग पॉपुलेशन हम उसको मानते हैं अबव 14 ईयर टू 60, दैट वाज 72%, यानी कि काम करने वाले व्यक्ति हमारे टोटल पॉपुलेशन का 72% पॉपुलेशन थी. इट वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, बट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इट वाज ओनली 50%. द 72% working population contribute to the GDP was 50%. It was very low, and productivity it was extremely low. Per hectare output, it is called productivity. You can say productivity per hectare output. Wheat, main occupation of the agriculture, you can say, and there are only the wheat and rice. These are the main crops in Indian economy at that time. Per हेक्टेयर आउटपुट ऑफ द वीट वाज ओनली 660 किलोग्राम, यानी कि 600 किलोग्राम एक हेक्टेयर लैंड के ऊपर उस वक्त वीट की प्रोडक्शन एक फार्मर लेता था. एंड राइस इट वाज जस्ट 665 किलोग्राम, वेरी लो कंपेयर टू द टुडे. एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, खाद्यान्नों का उत्पादन, इट वाज बेयरली एनफ फॉर सब्सिस्टेंस. और क्योंकि पर हेक्टेयर हमारी जो पैदावार थी, जो पर हेक्टेयर आउटपुट था, इट वाज वेरी लो,
that it was so low that barely hardly enough for subsistence, जीने के लिए भी, जिंदा रहने के लिए जितने अनाज के उत्पादन हमें चाहिए था उससे भी कम था. In 1947-48 it was recorded to be just 572 lakh tons. And fourth in this topic we are discussing the fourth one, that is industrial backwardness, how our industries were backward at the time of independence. First, there was a virtual lack of basic and heavy industry in the country. जैसे आज हम डिस्कस करते हैं कि टाटा है, सेल है, आपके जिंदल इंडस्ट्रीज हैं, जो आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस. There was no heavy or basic industry like these days in Indian economy. No production of the machines. There was no production of machine in India at that time. We have to import the machine for the production in Indian economy. Small scale and cottage industries, these are abolished by the British rulers, as you know very well, we have discussed it earlier. And depending on import from Britain, the Indian economy that was totally dependent on the British import for the raw material or the machines or the other extra material to produce in our country. And fifth point, that is rampant poverty. Bulk of population was very poor. People were not getting 2 square meals a day. Means there was no income. They lacked shelter and clothing also. This was largely owing to widespread unemployment, because a person who has no employment, he cannot get clothing, meal or shelter. And this was due to the destruction of the handicraft industries in India. And sixth point, that is poor infrastructure. Infrastructural development, including means of communication, transport, generation of power, energy, it was extremely low. In 1948, power generation capacity, it was merely 2100 megawatt. Length of the railway lines, it was 53,596 kilometer, and Pakka roads, it has coverage of 155,000 kilometer only. You can compare it with the today scenario, that in every city, you can say in every village, there is Pakka coverage of road, but at that time only the 155,000 kilometer roads were the Pakka roads. And seventh point, that is heavy dependence on imports. The country had to depend on import for machinery and other equipment of production, because there was no production of machines or other equipment in our country. Armed forces of the country also depended heavily on foreign import for the most of defense equipment, besides several consumer goods like sewing machine, medicine, kerosene oil, bicycle, etc. used to be imported from abroad. You can say that from a needle to every machine we have to import from the other country at the time of independence. जैसे कि हम बात करते हैं कि सुई से लेकर जहाज तक, यानी कि कोई भी छोटी से छोटी चीज के लिए भी हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज के ऊपर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर उस वक्त ज्यादा थी. लिमिटेड अर्बनाइजेशन. At the time of independence, bulk of the population of India lived in villages. In 1948, only 14% of population lived in urban area, while 86% lived in rural areas. Rural population lacked opportunities outside agriculture, and this compounded their poverty, because the main occupation in rural areas was only the agriculture, and it was on the subsistence level. एग्रीकल्चर सेक्टर, इट वाज ओनली फॉर द सब्सिस्टेंस, यानी कि जो खेती गांव के अंदर की जाती थी वो सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए की जाती थी, कि सिर्फ आपका काम चल गया, आपके आस पड़ोस का काम चल गया, उससे ज़्यादा और ज़्यादा मुनाफे के लिए, यू कैन से प्रॉफिट मोटिव एग्रीकल्चर हमारे कंट्री के अंदर उस वक्त नहीं थी. और उसके बाद 86% पॉपुलेशन हमारी रहती कहाँ थी? गाँव में रहती थी. देन ओनली द 14% पीपल दे लिव इन अर्बन एरियाज. एंड नेक्स्ट इज सेमी फिडल इकोनॉमी. On the eve of independence, Indian economy was neither wholly feudal or not a capitalist economy. Mean it was, you can say, mixed economy.
ना तो पूरी तरह से सामंतवादी प्रथा थी, यानी कि जमींदारी सिस्टम जो हमारे यहाँ था, और ना ही पूरी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। इट वॉज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। Today our economy is also a mixed economy, public sector as well as private sector, but at that time you are comparing with feudal and capitalist economy. Such an economy had the mixture of feudalistic and capitalist modes of production. Feudalistic mode of production leads to low productivity. Low productivity leads to the backwardness. Due to the semi-feudal system, Indian economy was backward economy. And 10th point, that is colonial economy. Indian economy was a colony of British government. Colony means उनका एक तरह से उपनिवेश कि under the guideline of British government, every main decision, every basic decision, these were taken by the British government. It implied exploitation of the Indian economy for the benefit of the British economy. Every person who wants direct to the other person for the benefit of self, मीन्स अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे डायरेक्शन में कोई चीज चलानी है तो वो ये भी चाहेगा कि उसमें मेरा कितना बेनिफिट होगा। सच मेन थिंग वाज विद द ब्रिटिश रूलर आल्सो। दे डायरेक्ट द इंडियन इकोनॉमी इन सच ए वे दैट मैक्सिमम बेनिफिट दे कैन गेट फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी। Following observation highlight how Indian economy suffered at the hand of the British rulers. British government curbed mean उसको ग्रैब कर लेना, उसको पूरी तरह से निचोड़ लेना। डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस, भारी से भारी टैक्सेस लगाए गए ताकि इंडियन इकोनॉमी के जो इंडस्ट्रीज हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, वो सारी की सारी खत्म हो जाए। दिस फोर्स द इंडियंस टू बाय द ब्रिटिश गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के सिनेरियो में भी हम बात करते हैं, अगर हमारे कंट्री के अंदर कोई कमोडिटी बनती है एंड इट हैज कॉस्ट ऑफ ₹10, वो 10 रुपए की कमोडिटी आती है, और चाइना से या अदर कंट्री से वही सेम कमोडिटी, क्वालिटी डजंट मीन देयर, वो हमें 7, 8 या 5 रुपए में मिलती है, देन वी विल प्रेफर दैट कमोडिटी, नॉट आवर। दैट दिस फोर्स द इंडियन to buy the British goods. Indian economy was used as a source of raw material for the British industries. As you can say, the cotton, rice are these materials. Indian economy was used as a source of raw material for the British industries. Export of raw material were almost duty free. जितना भी एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल का हमारे कंट्री से ब्रिटेन में जाता था, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं था, कोई भी ड्यूटी नहीं थी। एंड दस नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया वर ड्रेन्ड मीन किसी चीज का निष्कासन हो जाना, बाहर चले जाना, फॉर द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। ऑल रिसोर्सेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी दे वर यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स। एंड erotic, you can say cruel treatment, these were committed on the Indian artisans so as to force them to close their cottage industries. टॉर्चर करना किसी को, they were committed on the Indian artisans so as to force them to close their cottages, and this led to the destruction of the Indian handicrafts.